Okay, we'll start with the chemical kinetics now. Starting with the first question. Following reaction given is of first order in each direction with equilibrium constant 10 raised to 4 at 298 Kelvin. So it's actually a reversible reaction with K1 in the forward direction and K2 in the backward direction. Also, K2 per second is given. If one were to initiate the reaction starting with only the boat conformer, then the observed rate constant is. If one were to initiate the reaction starting with only the boat conformer, so there is a boat conformer which is getting converted into a more stable chair conformer, and for this reaction the observed rate constant would be. So indirectly what is being asked? A1. K1. Superb. अब K1 ढूंढने के लिए there is something else which is given. Rate constant. Equilibrium. KC is given. Equilibrium constant is given. And how is equilibrium constant related with K1 and K2? K1 by KF K2 by is K2 by KC. K1. K1. No. K1 by K2. K1 by K2. Don't make a mistake here. So the only important thing to understand over here, equilibrium constant, which is a constant for a reversible reaction, that is Kc, will be equal to K forward upon the K backward, where Kf is the rate constant of the forward reaction and Kb is the rate constant of the backward reaction, which is given as K1 by K2. Now, if one were to initiate the reaction starting with the boat conformer, matlab, for the forward reaction, the observed rate constant will be. Actually, you are supposed to find K1 here. Now, to find K1, it will be equal to Kc into K2. Kc ki value is given as 10 raised to 4 and K2 is given as 10 raised to 12 e raised to minus 42 kilojoule per mole and upon RT. So this combinedly will become 10 raised to 16 e raised to minus 42 kilojoules upon RT. Okay. Now, how do you solve this exponential equation? Log. By log. Log. And if you remember, we have already converted k equal to a e raised to minus ea by RT wala exponential equation into a logarithm form. Yes, sir. Yes, sir. So on the left hand side, we had got log of k equals to Log A minus EA by RT. minus ea by 2.303 RT. 2.303 r into 1 by t and plus Plus log A. log a. This is all to the base 10. Correct? So in this case, this will be log k1 equal to minus ea by 2.303 rt and log a will be actually log 16. So I'm just substituting the value here. This will be 42 into 10 raised to 3. Sir, it will be log 10 raised to 16. This will give 16. Sorry, log 10 raised to 16. Achha, now tell me what is the value of 2.303 RT when the 5.7 temperature kilojoule. is 5.7 kilojoule. superb. Temperature 298, 308, 303 तक के लिए चलेगा. So minus 42 kilo upon 5.7 kilo. ये 10 raised to 3 तो cancel off हो जाएगा and log 10 raised to 16 will become 16. ठीक है? This on solving gives you a value of about 7.34 and plus 16. So what you get over here is 8.64 as log K1. आपको ढूंढना है K1, तो it will be equal to 4 into 10 log of. raised to 8. Correct. So 10 raised to 8 power आ गया, मतलब ऑप्शन में एक ही है, so you've already got the answer as 4 point something into 10 raised to 8 per second. That is your rate constant for the forward reaction where the boat conformer is converted into chair conformer.
So this question was actually about Arrhenius equation and clubbed with the equilibrium constant ka relation, which is given as k forward upon k backward. Right? Yes, sir. Next is a reaction of secondary benzyl chloride, which is reacting with the OH minus by SN1 and SN2 mechanism depending on the solvent used. Now, if we go back to the organic chemistry, depending on the solvent used, so what are the two scenarios where SN1 will be favorable and SN2 will be favorable? SN1 is favorable in polar protic solvent and SN2 in polar aprotic. Super. ये पोलार प्रोटिक पीपीएस में फेवरेबल होगा, ये पोलार एप्रोटिक पीएस में फेवरेबल होगा, something which we know. So there is this substrate A reacting with the reagent OH minus. Simple substitution takes place to give you a secondary benzyl alcohol. This as a leaving group, which is a good leaving. Now kinetics ka question. Net rate is given as rate equal to 5.1 into 10 raised to minus 5 A into B plus 0.2 into 10 raised to minus 5 times A. Percentage of A reacts by SN2 mechanism when OH minus is 0.01 molar is. What do you understand by this rate law? First part and second part. So, so do you have to do like that K2 by K average into 100 like that? Yes. This is as good as a parallel reaction ka concept if you Yeah. recollect. Perfect observation. Dusra, when A and B both are given, this is which? SN2. SN2 because bimolecular होता है. Only A दिया है substrate मतलब SN1. SN1. Correct. So a percent of A that reacts by SN2 mechanism will be equal to. When the concentration of OH minus is 0.01, I'll just substitute B की जगह 0.01 because B तो मेरा OH minus है, right? Yes. ठीक है. So the numerator will be 5.1 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 2 B की जगह times A upon the total rate constant will be sum of both of them. So एक हो जाएगा 5.1 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 2 A plus 0.2 into 10 raised to minus 5 A. और परसेंट बोला है मतलब you have to multiply by 100. अब A लिखो या ना लिखो, this is a concept of parallel reaction where if there is a substrate A parallelly giving you B and C with the rate constant K1 and K2, then percent of B ढूंढने के लिए the formula was K1 upon K1 K1 upon by K K1 plus average. K2 into 100. सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है, जस्ट बी को 10⁻² जो दिया है सब्सटीट्यूट करके बस. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ. सो 5.1 into 10⁻⁷ नीचे हो जाएगा 5.1 into 10⁻⁷, and this I can write 20 into 10⁻⁷ times 100. तो 10⁻⁷ थ्रू आउट कैंसिल करके 5.1 upon 25.1 into 100. So this is approximately 5 times. 20, yeah. And this is approximately 20%, which is your option C. Correct? Question sir. simple था, but just parallel reaction का ये concept को आपको ध्यान रखना है. Parallel reaction. So only here you take that concentration of B, right? Otherwise, it's just like K1, K2, no? Meaning? Like here you take the like the Because there were two concentration of B. mechanisms which are Yeah. parallelly going on. In one of the case, B is there. In other case, B is not there.
So only when the B ka condition is given, we can apply this particular question formula. Yes, sir. So that is the reason we have to substitute B का concentration. बस ये थोड़ा सा change part था इधर. Okay. Yes, sir. Now this is something which is like an additional concept. पहले question देख लेते हैं. There is oxidation of NO to NO2 proceeds by the following mechanism. So reaction of NO का oxidation giving you NO2 follows the three-step mechanism. NO plus NO giving you N2O2 via K1 rate constant, N2O2 giving you NO plus NO via K2, and N2O2 oxidizes via K3 to NO2 plus NO2. Thus, the rate law in terms of d by dt of NO2 is asked. Now, normal scenario में, if we want to find the rate law, what is the first thing we observe? The slowest. RDS. RDS. यहाँ पर सबसे पहले you can't see RDS. Correct? Because none of the steps are being given as a slow or fast step of the reaction. Correct? Yes, sir. So ऐसे type के question में we apply a different methodology which is called steady state mechanism. अब ये syllabus में इतना ज़्यादा defined नहीं है, but somewhere this is a part which is important for advance. अभी तक तो आया नहीं है PYQ में, but still I'll just discuss this in case अगर आ गया तो ये ध्यान रखना. अब steady state mechanism में सबसे पहले through the three step mechanism we find which is the intermediate of the reaction. First step is find intermediate. N2O2. N2O2, because intermediate is that substance which is first Formed and then Formed and consumed. formed and then consumed. So N2O2. Then once we find the intermediate, the step one is to equate rate of formation of intermediate N2O2 with rate of consumption of the same intermediate N2O2. So intermediate is that substance which is first formed and then consumed. So it will be formed and consumed at the same rate. Using that concept, we equate the rate of formation equal to rate of consumption of N2O2. Now, where N2O2 is getting formed, मतलब which step? First step. तो उसका जो rate law है, that will be rate constant K1 into NO into NO, मतलब NO का square. तो कौन से step में वो consume हो रहा है? Second And third. and third. Second and third. मतलब consumption में there will be sum of two rate laws. Via the second step, it will be K2, N2O2, and then K3, N2O2, N2O2. Is this step clear? Yes. ठीक है. So now we have to just extract N2O2. जैसे हम normally use करते थे, I've given you x2 plus y2 giving xy. Then three steps में से we get a rate law which involves the intermediate. फिर उस intermediate को निकालने के लिए we use the concept of equilibrium constant. एक PYQ भी मैंने बताया था. HBR वाला. नहीं, HBR वाला नहीं. x2 plus y2 giving xy. तो जिसमें अगर रेट लॉ लिखते हैं तो हम रेट लॉ में एक इंटरमीडिएट आता था. 3/2 order. हाँ, 3/2 ऑर्डर वाला, 1.5 वाला. ठीक है, तो उसमें भी हम इंटरमीडिएट को निकालने के लिए के इक्विलिब्रियम लेते थे. यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट है, सॉरी, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिया है. सो इसीलिए वी हैव टू अप्लाई अ स्टेडी स्टेट मैकेनिज्म. ठीक है, तो उसमें पहले इंटरमीडिएट ढूंढ के उसका फॉर्मेशन एंड कंजम्पशन को इक्वेट कर लो.
and then you just extract the N2O2. So mathematically N2O2 common लेकर I will get K2 plus K3 into O2. तो इसको निकाल देते हैं. N2O2 will be equal to K1 times NO का square upon K2 plus K3 into O2. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. सो इंटरमीडिएट का इंपॉर्टेंट स्टेप. अब वी हैव टू फाइंड द rate law with the help of rate of formation. Now, in which step NO2 is getting formed? The third. Third. Third step. Okay, and rate of formation of NO2 as per this reaction, the original reaction. Can I write it as plus 1 by 2, the stoichiometric or reciprocal dNO2 by dt? Yes. Yes or no? Yes, sir. That will be equal to K3 into N2O2 into O2. अब N2O2 को you just substitute. You have got the answer. K3, K1, NO square into O2 upon K2 plus K3 into O2. What's the answer? A, B. A, right? Answer? A. B. A या B? So the B. two you ना still have because to इसमें 2 you transfer. will No? switch it then. Yeah. ये जो 2 है वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये 2 न्यूमरेटर में दिखेगा. योर आंसर इज ए. यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली रेट लॉ बोला है, तो आइडियली आंसर बी होना चाहिए, बट ऑप्शन में ऑन द एलएचएस दे हैव जस्ट गिवन dNO2 by dt. That is why the 2 needs to be shifted on the right, and that's why the answer will be A and not B. So, what is the reaction at more than 2 intermediates? उसका और कॉम्प्लेक्स I mean, मैकेनिज्म हो जाएगा. more than one, like that X2, Y2 example, mein there were 2 intermediates that were formed in 2 different steps now. So, like, हाँ. what is that type of reaction? स्टेडी स्टेट मैकेनिज्म में 2 इंटरमीडिएट्स वाला केस नहीं है आपको सिलेबस में. ये भी इतना डिटेल में नहीं है, बट स्टिल एक क्वेश्चन आया तो मैंने डिस्कस किया है. Okay, sir. तो मल्टीपल इंटरमीडिएट्स नहीं आएगा. यू हैव टू जस्ट फाइंड वन इंटरमीडिएट व्हिच विल बी देयर. Rate of formation is to be equated to consumption. Extract that and substitute in the relevant step. Okay? So this is how this type of question needs to be solved, if at all it comes. ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना, नए टाइप का क्वेश्चन है. Okay, this is a PYQ from 2018. For a first order reaction, A giving you 2B plus C at constant volume and 300 Kelvin. The total pressure at the beginning, T equal to 0, and at time T are P0 and PT respectively. At the beginning, it was P0, at the end after time T, it is PT. Now, initially, only A is present with concentration of A0, and T13 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value. The correct option is R. Assume all these gases behave as ideal gases. And I have to verify which graph is correct. Follow, how do we start? A direct formula we can use. Yeah. Sir, P naught Yes. P naught is equal to 0. P naught is 0 and P naught minus x 2x and x. अब again, numerator क्या है? 2 P0 upon 3 P0 minus PT. Perfect. So this is of the type 1 mole giving you 3 moles. है ना? This is the first order reaction in terms of partial pressure, and I had derived 2 cases. 1 mole giving you 2 moles, A giving you B plus C. उसका expression क्या था? P0 upon 2 P0 P naught upon 2 PT. P naught minus P.
परफेक्ट पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी एंड 1 गिविंग 3 के लिए ऊपर 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी. इफ यू नो दैट डायरेक्टली देन इट्स फाइन, अदरवाइज डिराइव करने का मेथड भी बताया हुआ है. So the rate constant for this first order reaction is 2.303 upon time t log to the base 10 twice of initial pressure P naught upon 3 times initial pressure P naught minus Pt. अब अगर 2.303 निकाल दो तो this can also be written as 1 by t ln of 2 P naught minus ln of 3 P naught minus Pt. चलेगा ना? Yes, sir. Because Yes. I need to verify the graph which is given in option A. So this will be Kt equal to ln 2 P naught minus ln of 3 P naught minus Pt. Rearranging, I'll get ln of 3 P naught minus Pt, which is plotted on y-axis, equal to minus Kt plus ln of 2 P naught. So this is of the type Y equal to Y M. is equal to mx plus y equals to mx plus c, where m is your negative slope of minus k. Hence, the first option is correct. is correct. C वाला ऑप्शन ln of p naught minus pt, इसका कोई ग्राफ बनेगा क्या वर्सेस टाइम? No, because it can become a negative value. We don't have a p naught minus pt टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ना, 3 p naught minus pt है और मैं डिवाइड भी करूं तो p naught minus pt by 3 आएगा. तो ये वाला एक्सप्रेशन का ग्राफ मुझे इसके लिए मिलेगा ही नहीं. तो दिस इज एनीवेज रूल्ड आउट. Yes, sir. Out of B and D, can you verify the option directly? D. Sir, D. D बोलता है rate constant is independent of concentration. Is that correct? No, No. Then Yes. then it's false. rate constant concentration पे depend करता है. No, sir. फिर D false हुआ कि Oh, true हुआ? sorry, correct, True, correct. true, it's correct. Rate constant K depends only on Half. temperature. Rate constant concentration पे depend करता ही नहीं है, मतलब ये तो direct है. Now T 1/3 is dependent on A naught. So is it like T half is independent for first order? So like फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई भी टाइम ए नॉट पे डिपेंड independent. करेगा ही नहीं. Yeah. So whether it is t 1/3, 2/3, 4/5, any time, it is not dependent on where we start for a first order. तो ये फैक्ट अगर आपको पता है तो बी भी wrong. रॉन्ग है. मतलब इसका आंसर है ए एंड डी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, उसको रीअरेंज करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म के साथ कंपेयर करके a वैलिडेट हो जाता है. बाकी ऑप्शन तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Moving to numerical value. So given at 298 Kelvin, there's peroxide, no catalyst, giving water and oxygen. The rate constant is K. Activation energy 76 kilojoule per mole. And the same peroxide in the presence of I2 gives you H2O and O2. Now the rate constant is 2 into 10 raised to 3 times K. क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? So that log of K. K2 by K1, Catalyst that all. हाँ, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है. For फंडा ये different है, activation energy. हाँ, तो फंडा ये है कि कैटलिस्ट जो है दैट डिक्रीजेस द Activation energy. एंड इंक्रीजेस द. Rate constant. यू कैन सी दैट कैटलिस्ट ने क्या किया, इसका रेट कांस्टेंट 2000 टाइम्स बढ़ा दिया.
This actually shouldn't be I2 if you know this is a reaction जहाँ पे I minus के presence में catalyst अगर use करते हैं तो peroxide decomposition बहुत fast हो जाता है. तो ये iodide वाला catalyst है. और इसका जो rate law है, if you all remember, was given as K times H2O2 into I minus. First order in peroxide, first order in iodide. A well-known catalytic rate law. Okay? पहला तो ये कॉन्सेप्ट है. आगे, thus activation energy of the reaction is decreased by x% in presence of catalyst. Value of x is कितने परसेंट से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया. Assume there is no change in exponential factor which is a. Right? Yes, sir. अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो चेंज हो रहा है, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज हो रहा है. Yes, sir. Yes, And the sir. temperature Constant. 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 So I've given you two variations for Arrhenius equation of rate constant का dependency. Yes. One was जब EA constant है, temperature change हो रहा है, तो 1/T1 minus 1/T2 आता है. केस 2 में जब temperature constant है, activation energy change हो रहा E1 है, तो minus E2. E1 minus One E1 minus minus E2 आता है. Excellent, very good. So Arrhenius का डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है log of K2 by K1 equals to 1 by 2.303 RT EA1 minus EA2. Now K2 is which value? Pattern. the second one. The second one. So K2 by K1 का ratio becomes 2 into 40,000. 10 raised to 3. 2 into 10 is to 3 equals to 1 upon. Now with 298 Kelvin, I can directly take this as 0.7. 5.7. And let me keep it in kilojoules only because activation energy वैसे भी kilojoules में, right? And EA1 is which value? 76. Without the cutting. 76 kilo. Minus EA2 is to be found, ना? समझा? ये K2 के corresponding EA2 है, K1 के corresponding EA1 है. I hope that is very clear. Yes. Now a simple calculation. Log 2 into 10 raised to 3 will be 3.3. 3.3 and 5.7 इधर ले लेते तो 5.7 kilo will be equal to 76 kilo minus EA2. So EA2 will be equal to 76 kilo minus 5.7 into 3.3, 21, 17, 171 again. So 1, 8, 8 and 8. So 18.81. Right? And this will be 57.19 kilojoules per mole. ठीक है? So, हाँ. so can you keep it as EA1 minus EA2 only and just divide by EA because you have to find the relative change only now? Yes. वही करना था एक्चुअली, बट ये जस्ट मैंने बताया कि EA2 निकालना है तो डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं. मतलब दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ लेट्स से द एक्टिवेशन एनर्जी वाज आस्क्ड, बट Yeah. इस केस में आपको क्वेश्चन तो पूछा है कि परसेंट ऑफ डिक्रीज कितना है. तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि 76 से वो डिक्रीज हो चुका है तो 57.9. तो डिक्रीज तो यही है ना. Yes, sir. परसेंट डिक्रीज विल बी 18.81. ये किलो में ही था. ठीक है. टू द इनिशियल 76. 76 kilo and multiply by 100. ठीक है. सो इसका जो आंसर है, आई विल राइट इट With डायरेक्टली, 24 around. 24. हाँ. ठीक है. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर 24%. समझा?
Yes, sir. Yes. Funda of again Arrhenius equation. Remember kinetics में Arrhenius equation वाला part, activation energy, rate constant, temperature, very important. Okay. Apart from the integrated rate laws, the next important part is definitely this thing. Next, following reaction is pseudo unimolecular reaction. दिखते हैं higher order होते हैं first order, so they are pseudo unimolecular reaction. It's a famous reaction of BDC, BDC undergoing hydrolysis to give phenol. phenol with the liberation of N2 gas and HCl. ठीक है? So organic के कुछ reaction यहाँ पर data wise connect हो रहे हैं. So initially, the concentration of A, the BDC concentration, is 50 ml of 1 molar solution. 50 ml 1 molar से क्या समझेगा? You Number can of find initial number of concentration, mole, like Moles. Always remember, whenever molarity and volume is given together, multiply to get the moles. Thumb rule याद रखना. Molarity, volume given together, multiply to get the moles. I will get 50 millimoles. Next, after 60 minutes, 0.2463 liter of N2 at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure is formed. If rate law is K into A into water, then K ka value is 1.11 into 10 power minus Y, molar inverse, second inverse. The value of this power Y is how much? Now to get to this rate constant ka value in terms of this power, what should be known? so you can find moles of N2. So by that you can come to know like how much of like the 50 millimole is used. Then you can just use the integrated rate equation and find K. Perfect, bang on, खत्म. आपको ये जो डेटा दिया है N2 का, उससे we can find the N2 का moles. So of course the moles could be found by ideal gas equation PV is equal equal to to nRT. So number of moles of N2 is equal to PV upon RT. Pressure is 1, volume is 0. Or I can say 2.463 into 10 power minus 1 upon R is, what is the R ka value to be taken? 0.0. 0.0821. So 8.2 into 10 is to minus 2 times the temperature is 300. ये निकल जाएगा. 8.2 times 3 is less than 25. 25. so can I just approximate it to 24.63? Almost अगर Yeah. देखोगे 24.60 तो आ रहा है. Yes, so Yes. तो ये हो जाएगा 0.01 moles. मिली में कितना लिखूं? 10. 10 10 millimoles हो गया. Now, once I've got कि 10 millimoles of nitrogen is formed, I can use my ICF table. Initial change and final. BDC plus pani is giving you phenol plus N2 plus HCl. अब देखकर ही समझ में आता है, अगर ये 50 मिली से शुरू हुआ और N2 0 था, तो फाइनली ये 10 मिली है, तो ये 40. 40 मिली बचेगा. ये इनिशियल है और ये फाइनल है. आता है समझ में? Yes. ठीक है. Now this 50 milli is nothing but your integrated rate law में value of A not. naught. A naught, and this is the AP. amount remaining after time t, which is 80. Yes or no? Yes, sir. Now tell me, this K which is given and the K which we find in the integrated rate law, are they same? No. No, sir.
What's the difference? The concentration of So we H2O. multiply, right, the concentration Of of A and H2O. and how much is that? पानी का concentration fix है ना? So 55.5, Yes, 1.8. 55.55 by 18. Pseudo के लिए याद है water is taken in excess, तो water का concentration is almost a constant, so we multiply the water concentration to K and replace it by another rate constant. yes, sir. मतलब this rate law, second step देखो, this rate law I can write it as K dash into A, where K dash is K times water concentration, which is a constant, right? Yes, sir. So now the K dash for the first order could be found by integrated rate law, which is 2.303 upon the time. अच्छा टाइम में भी एक चीज ऑब्जर्व करना है आपको, Second, you have to convert it into second. सेकेंड्स में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है. So this will be 60 times 60 into log to the base 10 initial upon final, मतलब 5 by 4. And how much is this value? 0.1. 0.1, because it's 0.7 minus 0.6, तो ये 0.1 हो गया. तो ये k dash का जो वैल्यू है that is 6.2 into 10 power minus 5 per second. Finally, third step में the k dash is equal to k times water, which is 6.2 into 10 raised to minus 5 equal to k nahi pata, and this will be 1000 by 18. Finally, the k comes out to be 1.11 times 10 raised to minus 6 molar inverse second inverse. आपको जो पूछा था वो 10 का पावर पूछा था, and the answer will be y is equal to 6. Okay, so it was a good question. The concept of pseudo unimolecular reaction, where the rate constant k dash, which we find over here, is a combination of k into H2O. Then H2O को substitute किया as a standard 1000 by 18 का concentration value. So we want to multiply A का concentration. Where So in the third equation. A का Yes, sir. नहीं, A का क्यों करेंगे? We are not finding the rate, we are just finding the rate constant. अगर आपसे रेट पूछा होता तो आप क्या करते? K डैश को मल्टीप्लाई करते A के साथ, और A का वैल्यू क्या है? So 50 millimole. ना 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 ना, this A is always the AT value, not A naught. Oh, yeah, 40 millimole. है ना, at time t लिखते हैं ये, this is always AT, remember it's not A naught. So if you were to find the rate, then of course the K dash should have been multiplied by AT, which is 40 millimoles. And वो भी millimoles में है, divide by volume करना पड़ता है, और total volume आपको actually दिया भी नहीं है. So, Hmm. so I'm a little confused. What did they want us to find? Like what K and K dash का difference? Like I didn't understand. No. The K value they have already given 1.11 into 10 raised to minus some power. Yes, We have sir. to just find that power. Yes, sir. So what I did is, in the first step, through the data of nitrogen, I got the number of moles. Yeah. Through the moles, ICF table बना के, I got A naught and AT. Yes, sir. Once I've got that, this rate law, I can rewrite it as Ka water की जगह K dash into A. सूडो में यही करते थे ना हम, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले लेते, राइट? Yeah. Yes, sir.
तो अब ये जो k डैश है वही अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से ढूंढ लिया 2.303 अपॉन टाइम log to the base 10 a naught by 80. Yes, sir. अब ये जो k डैश है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ k एंड H2O जिसमें Yeah. वाटर का concentration is a constant which I substituted as 1000 by 18. Okay, sir. Got it. ठीक है तो उससे जो भी k का वैल्यू आएगा दैट विल बी एज 1.11 into 10 is to minus some power. वो पावर आपको यहाँ पे ढूंढना था which comes out to be 6. समझा? Yes, sir. Next, in acidic condition, benzyl penicillin BP undergoes a parallel reaction to form product A, B, and C. K1, K2, K3 are respectively given. Percent of A is to be found. What concept? Parallel reaction. Parallel reaction. Parallel reaction. Already बता चुका हूँ K1 by K parallel average. reaction. K1 by K average, which will be equal to K1 plus K2 plus K3. into 100. ठीक है तो ये सिंपल क्वेश्चन था इसमें आपको परसेंट ऑफ ए जो ढूंढना है दैट कम्स आउट टू बी 6.5. नॉट डूइंग द कैलकुलेशन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था खाली पैरेलल रिएक्शन का फंडा अपन ने दो रिएक्शन का किया है बट दो या मल्टीपल पैरेलल रिएक्शन हो तो भी फंडा रिमेन्स द सेम परसेंट ए परसेंट बी परसेंट सी कुड बी फाउंड आउट रिस्पेक्टिवली. Next, for the following first order reaction twice N2O5 giving 4 NO2 plus O2, a famous first order reaction. Initial pressure was found to be 500 torr and after 50 seconds total pressure was 503 torr. Thus, half-life of the reaction is what's the flow? You Wants to can make find stable. K by using the standard result. Can we use any standard expression for this particular No, reaction? we'll have to make an ice table and No, we'll have to derive it because like we Yeah. have done A giving B plus C or A giving 3 products. yeah. करेक्ट 1 मोल से 2 मोल्स के लिए है 1 मोल से 3 मोल्स के लिए है अगर इसको डिवाइड बाय 2 भी कर लूं तो 1 गिविंग यू 2.5 मोल्स का ये केस है which is not there as a standard equation. अगर कोई standard equation नहीं है it's fine we can derive it to the ICF table. ICF बोल देंगे because ये reversible नहीं है ना Yeah. तो similar to ice but ICF बोल देंगे right. Initial at time t equal to 0 let the partial pressure be Pi. NO2 NO2 at the start will be 0 change decrease by 2x, 2x. 2x increase by 4x. and x respectively. Finally, I have Pi minus 2x, 4x and x. Now through the data, what value is 500 torr? PI Pi plus plus 3x. K minus 2. PI Huh? plus 3x, no? Like total. Pi plus 3x is 503. Initial pressure 500. 500 किसका वैल्यू है रे? 500 is PI. हाँ मैंने वो पूछा 500 किसका वैल्यू है? Pi का. ठीक है अब आफ्टर 50 सेकेंड्स जो टोटल प्रेशर है वो ये है Pi plus 3. Pi plus 3x is 503. यस Pi plus 3x is 503 जिसमें Pi तो हमें पता है तो 3x will be equal to 3 and x will be equal to 1 torr. मतलब ये जो Pi minus 2x की वैल्यू है वो 498 torr हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है now the expression for the rate constant would be k equal to 2.303 upon the time which is 50 seconds into log to the base 10
pi is proportional with a naught, right? तो 500 upon 80 की जगह pi minus 2x, that's 400. Now log 500 by 498. Little more than one. Very little. So 1 का log almost 0 है, so this will be 0 point something, a very very small value. Okay. Yeah. अब इस टाइप का calculation you will never be able to do it. So there will be some data related to this log value which has to be given. ठीक है, और वो देंगे ही, वरना ये सॉल्व करना एक्यूरेटली पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो लेट मी डू द कैलकुलेशन. 500 डिवाइड बाय 498, 1.004 आता है ये वैल्यू, और इसका लॉग ऑफ कोर्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल, and log of 1.004 is 0.0017. So the k value will be 2.303 upon 50 times the value is 1.7 into 10 raised to minus 3. So after doing this calculation, आपको मिल जाएगा 4 times 10 raised to minus 5 per second. Let me check. 2.303 into 1.7 divided by 50. Sorry. 7.8 into 10 raised to minus 5. ये आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको हाफ लाइफ. So half life is 0.693 upon k, which is 0.693 upon 7.8 into 10 raised to minus 5. 0.693 divided by 7.8. That's around 8,884 seconds. But you are supposed to convert this into minutes. So 8884 divided by 60 gives you 148 minutes. This was the numerical value answer. Of course ये ज्यादा कैलकुलेटिव है, but this is how it is. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो of course ये वाला एक पार्ट जो है वो डिफिकल्ट होगा. इसके बिना will not be able to solve, because you will never get this accurate value of 1.7 into 10 raised to minus 3. So that in a way they will give you. So will they consider one upper niche, like 147, 149 or no? Yes, yes, they do consider. Actually, the answer will be given as a range only. Okay, sir. So 148 के आसपास आंसर है, तो 147 to 149 और 150 का range will be given and considered. Okay? Yes, sir. Okay, next. This type of question is asked in PYQ many times. 2 से 3 बार repeat हो चुका है अलग अलग way में. So for the following two different reaction, X2 product, Y2 product, the half-lives are given 5 minute and 15 minute respectively. And the rate law is of course K times X and K times Y. First order है. ठीक है. Initially X naught is equal to 4Y naught. They react with same time, and after X minute, the concentration after time t become equal. मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है कौन से टाइम के बाद इक्वल हो रहा है, दैट इज टू बी फाउंड. व्हाट शुड बी द अप्रोच? Exponential form. कैन यूज दैट. दैट्स अ वेरी लेंथी Can we मेथड. just draw the Sir, scale and like firstly, sir, कैन वी firstly, ड्रॉ द स्केल? sir, T half से जान को K निकाल. ई हाफ से के निकालेगा, फिर फिर उसके बाद K को वैल्यू में इक्वेशन में डाल के log K मतलब 80 log A नॉट बाय 80 is KT.
कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी मेथड है। ठीक है, वो कर सकते हैं। आपको एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बोल रहा हूँ जो जान ने बताया। जान, क्या बोला आपने? So we can draw like the half का scale and then we can just keep reducing by half life and check. करेक्ट, मतलब नंबर लाइन मेथड। तो दो नंबर लाइन बनानी है आपको, एक x के लिए, दूसरा y के लिए। अब इनिशियली x नॉट 4 y नॉट के बराबर है, यानी मैं x का ये स्केल बना रहा हूं जो कि 4 y नॉट के बराबर है, और यहां पर y तो y नॉट से शुरू होगा। अब इसको आधा 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 डिक्रीज करते रहो, और एक टाइम पे ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, वो टाइम आपको फाइंड करना है। समझ में आया क्या किया? Yes, sir. तो with 4 y नॉट at the start, after one half life it will become 2 1. 2 y नॉट, और एक हाफ लाइफ के बाद y नॉट, y0/2, y0/4 एंड सो ऑन। इसको कितना टाइम लगा आधा होने के लिए? 5 minutes. Each of that will be 5 minutes because it's independent of the concentration. अब y0 से y0/2, So y0/4 15. एंड सो ऑन। 15 minutes. यस, आंसर तो आ चुका है। ये 15 मिनट लगता है, ये भी 15 मिनट। अब जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन y0/2 हुआ था, तो द टाइम टेकन वाज 5 into 3 year and 15 year, which is same. That's why the Yeah. x का value is 15 minute and that is your answer. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने तक कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसका दूसरा भी मेथड है विच इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला मेथड, बट दैट इज वेरी वेरी लेंथी। So ये in विद this इन sum, it's not सेकेंड्स। that long. सॉरी? In this sum, it's not that long because ln2 will cancel from both sides. So then not that long. स्टिल वो नंबर मतलब इक्वेशन Yeah, यूज yeah. करे बिना आपको नंबर लाइन मेथड से आ रहा है, No, तो ये this is बेस्ट short. मेथड है। Yeah. वेरी वेरी शॉर्ट मेथड, मतलब आपको डायरेक्टली ये बना के ही मिल जाएगा, विद इन सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। सो बहुत इजी शॉर्टकट मेथड है ये। फाइन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, a good question. For the following reversible reaction, A2 plus B2, K1, K2, giving you 2AB. This is 90 joules. Huh? What is this value, 90 joules given? So Activation EF of of forward Activate. reaction, activation energy. Activation energy forward, and 100 is activation energy for backward, Activation energy. the delta H will be -10, Minus 10. indicating the reaction is exothermic. 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 ठीक है, तो इतना ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब आगे, it was found that at x Kelvin, forward and backward reaction show the same percentage change of rate constant per degree rise in temperature. Then what is that x Kelvin temperature? X की वैल्यू क्या है? Forward and backward reaction show the same percent change of rate constant per degree rise in temperature. What is change of rate constant per degree rise of temperature written as? Is it that mu? That ना ना ना, म्यू का कॉन्सेप्ट था कि फॉर एवरी 10 degree. 10 degree. Right. 10 The degree rise in temperature, the rate constant almost doubles. मैंने आपको एक पूछा कि हाउ डू वी राइट रेट कांस्टेंट चेंज पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर? रेट कांस्टेंट चेंज with respect to change in temperature, how can we Arrhenius mathematically write? equation. Huh? The BK Arrhenius by equation. e raised to minus
e raised to minus a by rt minus e raised to minus a by rt plus 1. हाँ, so what you have done, Darshil, is took the RNS equation. हाँ, लेकिन ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी इंटू जो आया वो टर्म कहाँ से आया आपको? मतलब तूने क्या बोला? ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, और आगे भी कुछ बोला ना? हाँ, माइनस ए ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी प्लस 1. ई प्लस वन, ये कहाँ से आया तेरे को? T plus 1 because it is per degree rise, no? So T plus 1. नहीं 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 नहीं, मैंने सिंपल आपको पूछा मैथमेटिकली चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर कैसे लिखेगा रे? So you just do derivative of R. यस, Yeah. इट इज डेरिवेटिव ऑफ द रेट कांस्टेंट वाया आरएनएस इक्वेशन. तो खाली मैथमेटिकली आपको मुझे ये बोलना था डी के बाय डी टी फॉर द फॉरवर्ड इज इक्वल टू डी के बाय डी टी बैकवर्ड. बस ये था आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Rate constant change per degree rise in temperature is derivative of the rate constant with respect to temperature. Now, in general, my Arrhenius equation is given by K equals to A e raised to minus EA by RT. Now, derivate it with respect to temperature. So, A तो constant है. So, derivative will give me E raised to minus EA by RT into d by dt of minus EA by RT. अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. And what will that give me? EA by R will come out Correct. and 1 by T square. And negative sign? That'll get, because it'll be minus 1 by T square, so it'll get cancelled, no? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Yeah. So can I write it directly as a e raised to minus EA by RT into minus EA by R बाहर आ जाएगा और minus 1 by T square हो जाएगा. So it will be EA by RT square. चलेगा everyone? Yes, sir. Yes, sir. And this is my, क्या है ये? Circled part. K only. तो short में it is K EA by RT square. ये मेरा जनरल dk by dt का एक्सप्रेशन है. समझा गया? Yes, sir. अब using this equation 1 and equation 2 का general relation, what I get is k forward EA forward upon RT square and k backward EA backward upon RT square. Is that okay? Yes, sir. अब ये वाला पार्ट तो कैंसल ऑफ हो जाएगा and I have the values of EA forward and EA backward. But K forward and K backward जो है I have to write in terms of मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है ना, तो अगेन आई विल रीराइट KF as Arrhenius AE raised to minus EA forward by RT. अब A के बारे में कुछ नहीं दिया है तो I'll assume that to be a constant, right? Yeah. AE raised to minus EAB by RT into EA backward. A को कैंसिल ऑफ कर देंगे. अब EA forward upon EA backward the ratio will be equal to E raised to minus EAB by RT upon E raised to minus EAF by RT, which is equivalently E raised to EAF minus EAB by RT. ये पूरा ब्रैकेट में.
समझ गया? Yes, sir. अब let me just substitute the values here quickly. ये forward is how much? 90. 90. That will be 90 by 100 equal to the difference of forward minus backward is -10. minus negative 10 by RT. अब only one is unknown, that is temperature. Substitute and we'll get the answer. Clear? Yes, sir. ठीक है, so here also after again ये exponential form को next step में क्या करना पड़ेगा? ln ln के form में and then log to the base 10 करके you can get your T का value which is 12. 11.4 Kelvin. And here ln of 100 by 90 या 10 by 9 का value आपको दिया गया है 0.1052. This you can use it. अदरवाइज न्यूमेरिकल में तो अगर अप्रोक्सीमेट करोगे ऑप्शंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. If it's a numerical value, there will be some data given to find out the accurate answer. Otherwise, they will accept it as a range. Find till here. Yes, sir. Next, consider the following reversible reaction. So if you observe, there are a lot of questions which I have picked up, which connects your equilibrium constant and the kinetics. And now this is a question where equilibrium, kinetics, and delta G naught, thermo, all three will get connected. समझ में आ रहा है? Yes, काइनेटिक्स sir. के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कोई भी रिएक्शन के लिए देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. Thermodynamic, kinetic, एंड इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले वी अंडरस्टैंड वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. फॉर दैट वी यूज kinetics. thermodynamics का डेल्टा जी नॉट लेस देन 0. देन वी Yes. आस्क whether the reaction has gone to completion or not, या extent of the reaction क्या है. For that QC. QC KC का relation मतलब equilibrium constant, and then the speed of the reaction was related with kinetics, that is rate constant. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो इन तीनों चीज को रिलेट करने वाला है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. Consider the following reversible reaction A plus B reversibly giving AB. Homogeneous gaseous equation है. Activation energy of the backward reaction exceeds that of the forward reaction by 2 RT if pre-exponential factor of the forward is 4 times that of the backward. जनरली प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो वी हैव टू कंसिडर द ए एफ एंड ए बी सेपरेटली एंड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन इज हाउ मच. Now to reach up to G naught, सबसे पहले what is required? Kc is kf by kb, and then you use the delta G naught का formula minus RT ln Kc. Yes. करेक्ट. डेल्टा जी नॉट के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के साथ के एफ अपॉन के बी से रिलेटेड है, और के एफ अपॉन के बी का रेशियो कैसे मिलेगा? Arrhenius equation. Log आरएनएस K2. इक्वेशन, K2 by K1 वाला रिलेशन. परफेक्ट. Yeah. So first part we will use log of Arrhenius equation Kf by Kb equals to 1 upon is the temperature constant. Yes, sir. Yes. Yes, so 2.303 RT. ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट ना हो, तो क्या करने का?
A1 upon T1 minus A2 upon T2. तो वो थर्ड सिनेरियो था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा कांस्टेंट है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला नंबर 1, 2 या 3, तीन फॉर्मूलाज दिया है। 1/2.303 RT अलग हो जाएगा एंड द डिफरेंस विल बी EAF माइनस EAB या EAB माइनस EAF। EAB minus EAF. ये भी है क्योंकि यहाँ पे ऊपर KF है नीचे KB है, तो यहाँ पे पहले B आएगा माइनस बाद में फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, नहीं तो माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाएगा। इज दिस द फॉर्मूला? Sir, but even A Yes, is sir. changing for forward and A backward. हाँ, तो फिर यहाँ पर जो log A वाला पार्ट है वो भी तो आएगा AF अपॉन AB। Yes. So, जा, ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट था। अब ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, दो log K1 K2 के एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो सामने log के A ही आता है ना, A1 और A2, एंड व्हेन यू हाँ टेक द डिफरेंस यू गेट K2 by K1, तो वहां पे A2 by A1 आएगा, यानी KF by KB है तो AF by AB आएगा। क्लियर है? yes. yes, sir. तो आई हैव टू जस्ट फाइंड log ऑफ K इक्विलिब्रियम ना, मुझे तो log भी सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज यही तो मुझे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। 1/2.303 RT। Now check this. EF backward is given exceeding that of the forward by RT. 2 RT, sorry. 2RT. So their difference is itself 2RT. 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 तो RT सब्स्टिट्यूट ना करके डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और log ऑफ फॉरवर्ड 4. इज 4 4. टाइम्स। It's better to use ln here, right? Because ln2 is given. चलेगा, वॉट एवर यू प्रेफर, कोई इश्यू नहीं है। अगर ln लोगे तो 2.303 निकाल Yeah. देना है। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद ln, फाइन यूजिंग ln, बिकॉज ln का वैल्यू दिया है। अभी यूज करो चलेगा, लॉग के साथ भी आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। ln वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ln के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 1 बाय RT RT AB minus. इंटू 2RT एंड प्लस ln ऑफ 4 हो जाएगा। Oh, yeah. दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब 1.4. 3.5 total. हाँ, टोटल 3.4 हो जाएगा। अब ये ज्यादा इजी है क्योंकि डेल्टा जी नॉट अगर आप यूज करते हो तो यू नो टू फॉर्मूलाज, वन इज Minus RT as 2.303 in वाला right. और दूसरा माइनस RT ln के वाला। अब RT ऑलरेडी दिया हुआ है 2500 इंटू ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज 3.4 8,500. ना। 8,500. तो एक्यूरेटली बिट ढूंढ सकते हैं ना, 2500 इंटू 3.4, एग्जैक्टली आ रहा है। तो 8,500 जूल पर मोल, और आपको जूल पर मोल में ही ढूंढने बोला था, मतलब योर इंटीजर वैल्यू आंसर विल बी 8,500। ln जमता है तो ln से करने का, नहीं जमता है तो इससे करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ln यहाँ पर थोड़ा बेटर आंसर दे देता है बिकॉज ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बोथ द वेज आर फाइन, आई हैव शोन यू बोथ द वेज। ठीक है, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। So can you go back for a second? That's sort of. ओके, सो दिस इज 2022 का PYQ। Match the rate expression in list 1 for the decomposition of x with the corresponding profiles provided in list 2. X, S, and K are constants having appropriate units. So we're supposed to match the list 1 with the list 2. And some rate laws are being given with some condition. जैसे first में, under all possible initial concentration of x.
rate expression for the first case is K times concentration of X upon XS, which is a constant, plus the concentration of X. Now, under all possible initial concentration, मतलब क्या क्या values ले सकते हो? Starting from Anything except 0. With 0 to X, S. No, with 0 to the initial concentration. 0 to initial. All Anything possible, except all 0. possible. Anything. Anything is from 0 to Infinity. infinity. अब 0 लेंगे तो रेट 0 हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स जब कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो रेट तो 0 ही होगा. ठीक है. अब लेट्स से केस 1, अगर मैं x का कोई भी इंटीजर वैल्यू लू 1, तो केस 1, इफ x का कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन टू बी 1 मोलार, व्हाट इज रेट? K by K XS. upon XS plus 1. Upon XS plus 1. And k and x has been constant, this will be overall. Constant. Constant. And rate constant कब होता है? Zero order. Zero. Zero order. जीरो ऑर्डर है ना. तो ये केस 1 में मुझे जीरो ऑर्डर मिल गया. अब फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी जाते हैं, तो इफ x is tending to infinity, the rate will be equal to K. Zero, no? So K, no? हाँ, इसको x से डिवाइड कर लो तो xs अपॉन x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. When x tends to infinity, xs by x will tend to 0. 0, so rate will become equal to k, again a K. constant. Constant. This clearly confirms that this particular rate law is following Zero order. Zero. zero order kinetics. Now being a zero order, ये किसके साथ मैच करता है? Let's check. First वाला list 2 के E के साथ. P. Yeah. हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये यहां से नहीं, यहां से ही चालू होगा. ये एरर है. एंड वी नो दैट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट फॉर अ. 0 First order. order. Zero order. तो ये पी से तो जा ही रहा है. नेक्स्ट, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. First order. First order. First order. Half life is increasing with the initial concentration exponentially. half order. Half order. मुझे बताओ, what was half life related with the concentration as? A Then naught what? is Inversely to 1 proportional minus to N. A not raised to N minus 1. 1 minus n नहीं है. अरे like 1 reciprocal minus n to 1 directly minus हाँ proportional. हाँ, ओके ओके. प्रपोर्शनल करेगा तो ठीक है. अब इसमें जीरो ऑर्डर का हमें ऑलरेडी पता है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. जीरो ऑर्डर के लिए तो हाफ लाइफ वाज proportional to a naught. Yeah. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ Independent. इज कांस्टेंट. सेकंड ऑर्डर Inversely proportional. इनवर्स टू ए नॉट. अब अगर हाफ ऑर्डर लिया, Proportional to root A. Direct to root. Yeah. proportional to root of a naught. How is the graph for this? Y square equal to 4AX का parabola. परफेक्ट. कभी भी ग्राफ के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है, रिलेट द इक्वेशन. अगर हाफ लाइफ इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस एंड concentration on x एक्सिस, दिस इज ऑफ द टाइप y proportional to root x or y square proportional to x, which is y square equal to 4ax type, मतलब पैराबोला. करेक्ट. Yes, sir. Yes. क्या ये पैराबोला को फॉलो करता है? Yes, sir. यस, मतलब ये वाला जो है, दैट हाँ. विल बी फॉर अ हाफ ऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, concentration versus time linearly decreasing. 0 order. 0. It is at equal to minus kt plus a naught relation. Yes, sir. Of course, for a zero order.
ln x वर्सेस टाइम, First. First order. ये तो एक ही ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर ऑब्जर्वेशन? Yes, sir. मतलब लिस्ट वन का फर्स्ट कैन मैच विथ वन एज सॉरी पी एज वेल एज Yes. एस। अब यहाँ पर मैच टू वन ही था, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस ऐसा दिया है जहां पर वन टू मैनी का मैच है, फिर आपको फाइनल ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना था। एक्चुअली ये मैट्रिक्स मैच है, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने सिंगल मैच का दिया हुआ है। समझ में आया क्या किया? Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, रेट इक्वल टू के टाइम्स एक्स अपॉन एक्स एस प्लस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स का इज मच लेस देन एक्सेस। फर्स्ट ऑर्डर ना, We have to. एक्स अगर बहुत छोटा है तो आई कैन इग्नोर एज कंपेयर टू एक्सेस, Yes. इट विल बिकम के एक्स अपॉन एक्सेस। के और एक्सेस तो कांस्टेंट है, तो इट इज ऑफ द First order. First order. फर्स्ट ऑर्डर, मैच करता है क्यूटी के साथ। नेक्स्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स का मच हायर देन एक्सेस। अब एक्स अगर बहुत बड़ा है एक्सेस से तो रेट लॉ बन जाएगा We'll ignore excess. No? Yeah. So okay. Zero order. Zero order. जीरो ऑर्डर, Zero order. क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बहुत ज्यादा है तो एक्सेस को निकाल देंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, के आ जाएगा, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए पी और एस मैच करता है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स का मच हायर देन एक्सेस, एक्स बहुत बड़ा है तो वापस एक्सेस को इग्नोर, एक्स और एक्स कट फर्स्ट जाएगा, ऑर्डर ना, First order. तो फर्स्ट ऑर्डर First हो order. जाएगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से इट विल मैच विथ क्यूटी। अब द करेक्ट आंसर इज A. A. समझा? Yes, sir. Yes, sir. 2022 का पीवाईक्यू टफ नहीं है, खाली उन्होंने वन टू मैनी का मैच देकर कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन में दे आर गिवन वाज वन टू सिंगल मैच। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये दो मैच कर रहा है लेकिन दिया एक ही मैच है, तो हीट ऑफ द मोमेंट में वो स्ट्राइक नहीं होता है। तो एडवांस में ऐसे सब फालतूगिरी, दे विल ट्राई एंड टेस्ट योर पेशेंस विथ रिगार्ड्स टू द क्वेश्चंस। So keep your calm and understand the question properly and identify the answer. Okay? Yes. Sir. Yes, sir. Yes. That covers all the important concepts related to the chemical kinetics. I have taken some of the important good PYQs also, and other questions I picked up from the reference book. But if you observe all this question, it covers almost all the concepts which we have discussed in our synopsis from chemical kinetics. Okay? So once again, solve these many questions once again by just observing the question, not observing the solution. And then you can complete your PYQs from the marks app and consider that this chapter is done. That's more than enough. और कुछ नहीं करना है। And this will also help you for mains, bit set, and other examinations. Okay?